का पहला ऐसा चैनल है जिसे मार्को रूबियो ने ईरान संकट के बीच पहला इंटरव्यू दिया है। एनडीटीवी से बातचीत में रूबियो ने कहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात सकारात्मक रही है। पीएम और ट्रंप के संबंध चीजों को आसान बनाते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध चीजों को आसान बना देते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे, प्रगाढ़ हो रहे हैं। क्वाड पहले से ज्यादा अहम है। क्वाड के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मुद्दों की प्राथमिकता तय करना। ऊर्जा सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है और ऊर्जा आयात में भारत ने सूझबूझ दिखाई है। भारत अपने ऊर्जा आयात में विविधता लेकर आया है। परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान। होर्मुज में ईरान जो कर रहा है वो अवैध है, ये मार्को रूबियो ने कहा है। One of the most substantive relationships that India has with any country is the relationship with the United States. And the US Secretary of State, Marco Rubio, here in New Delhi at the moment. He was in my hometown of Kolkata earlier on today. It's a hectic visit, but a very important one and a very busy sort of juncture in international politics. You've had a meeting with Prime Minister Modi in just the last little while. The relationship, India and the US, it comes with huge opportunities, but it comes at a time when there are challenges around the world, not least of all because of the situation in West Asia. How did the meeting with the Prime Minister go? What did you discuss? It went the way it always does, and that's very positive. You know, the foundation of the relationship between our countries now, and obviously a lot of it is enduring as well, is the relationship between the President Trump and Prime Minister Modi, and it dates back to the first administration under Trump. And so I think that always makes it easier to have these meetings because of the personal affinity they have to one another. But we have so much alignment on so many issues. And really, as I've said, and I just said a moment ago speaking to our embassy staff here, one of the cornerstones of our approach towards the Indo-Pacific, considering ourselves a Pacific nation, by the way, is the relationship with India, which has only grown. It's grown in the financial realm, and I think there are other opportunities for us. So as much as anything else, it is a visit to continue to build on a relationship that's finding new areas of potential cooperation and co-production, even in defense, on technology, on the investments, mutual investments in each other's countries, with over $20 billion of Indian companies now invested in the United States. So really, it's a visit to reaffirm, just reinvigorate and explore new opportunities that we can continue to build on what's already a very vibrant relationship. And you've extended an invitation to the Prime Minister on behalf of the President to visit Washington. Yeah. Is that right? That's and correct. What did he say? He's looking forward to that? Yeah, well, obviously, you know, anytime you have someone who's as busy as he is, and he travels quite a bit, the Prime Minister does. He just came back from a foreign trip of a few days. But we'd love to have him come to Washington. We also hope to see him at the G20 late next year, late this year in December in Miami, which will be at Trump-Doral. Possibly the G7 as well next month in Potentially, France. yeah. And again, they'll see each other if they're there, obviously. But we're hosting G20, so but we'd love for him to come beyond just that and continue to build. And so then the job, when that date is set, the job of people like myself and Jay here and others is to sort of find work product that can lead to deliverables so that when our leaders meet, it's not just a social setting, but they have some things to announce and to work on. Secretary, also over here for Quad, that happens on Tuesday. A lot of people say that Quad isn't as important as it once was. Your visit over here, do you believe it's going to bring Quad back onto the plane that it once was? And is this Quad relationship? I don't know who says it's not. China? Yeah, I don't know who says it's not as important as. I think it's as important as it's ever been. I think it's actually more important than it's ever been. These are four strong allies who, by the way, also happen to be four very strong economies, four countries that have a global reach, and that together, when we find areas that we can work together on, we can make a huge difference in the world. You think about the issue, for example, of critical minerals and supply chains. Every one of these four countries in this coalition, in this partnership, is impacted by that. And every one has something to bring to the table in that regard. So the issue with the Quad is not that it's not important, is that it has the ability to focus on so many problems that you can't do them all at once. We have to sort of prioritize. These are the first 5. These are the first 10 that we're going to work on together. That's been the challenge with the Quad is figuring out, because we have so many opportunities that we can do together, which are the 3 or 4 we want to really start with. So my first meeting as Secretary of State, literally within an hour of swearing in, was a Quad meeting. And obviously we're working on setting up a Quad leaders meeting. But the one thing we were able to achieve last year working at the working levels between the respective countries is we don't just want the Quad to be a semi-annual gathering of friends. तो हमारे के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी आप सुन रहे थे। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एनडीटीवी ने ये इंटरव्यू किया। रूबियो का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और ईरान युद्ध के बाद ये पहला इंटरव्यू है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और सकारात्मक रही है, ये मार्को रूबियो ने कहा है। ये मोदी और डोनाल्ड ट्रंप
उनके जो संबंध है आपसे और चीजें उससे काफी आसान हो जाती हैं। इस खबर पर और ज्यादा आप सभी तक डिटेल पहुंचाने के लिए हम लिए चलेंगे आपको आदित्य राज कॉल के पास। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। आदित्य, मार्को रूबियो का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है भारत का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हुई, और अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से विश्व सोम ने, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, क्या कुछ मेन बातें रही हैं और किस तरह से इसको सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू है। ईरान युद्ध के बाद पहला इंटरव्यू। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आए हैं 4 दिन के लिए, और पहले ही दिन कलकत्ता से नई दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया, और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने अमेरिकी राजनयिकों के संबोधन किया, उसी के बाद विष्णु सोम, हमारे जो सीनियर मैनेजिंग एडिटर है, उनसे बातचीत की। पूरी जो बातचीत जो है अमेरिका भारत के दरमियान जो रिश्ते हैं उसके बारे में रही, ईरान युद्ध के बारे में रही। बहुत सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिन में 2 बजे जो उनकी मुलाकात हुई बहुत ही सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि कई ऐसे विषय हैं अमेरिका और भारत के बीच में जिनके बारे में उनसे चर्चा रही। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है कि वो जल्द ही व्हाइट हाउस आए, वॉशिंगटन डीसी आए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो साथ में अमेरिका और भारत जो है अनाउंस कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका अभी ट्रेड की डील जो है बातचीत कर रहा है। एक इंटेंट अग्रीमेंट का जो है अनाउंस किया गया था इसी साल, और अब अगले कुछ हफ्तों में ये दलील हो सकती है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकता है। क्या ये डीसी में होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे? तो बहुत बड़ा एक इंटरव्यू, चाहे वो इजराइल के विदेश मंत्री हो, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री हो, या अमेरिका के, सब एनडीटीवी से बातचीत कर रहे हैं। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए अगली खबर की बात